वैलिडेशन का मतलब क्या होता? Validity date. वैलिडिटी डेट. ओके, एंड व्हाट इज दैट? व्हाट डू यू मीन बाय वैलिडिटी? Still it is working out. Still it is working out. So you are focusing on the date only that we are having on the mobile phones on our DTH recharge, right? That the validity of the date is still this one, right? Yes, sir. But actually, what is the meaning of validation? Checking. Checking. Very good. Validation actually means the correct data. समझ में आया? Validation का मतलब होता है what? Correct data. Now, here as you could see, यहाँ पे अगर मैं आपको डेटा एंट्री करने बोलूंगा, then what you can do? You can enter any number. See, 102, 200, 300, 600. Correct? Yes, sir. But don't you think that this is wrong somewhere? If we talk about this marks, Yes, sir. why it is wrong? Because they give different numbers. They give different numbers. No, not that actually. Anybody else? Can anybody tell me why this 102, 200, 300, 600 is wrong here at this place? Always marks should be less than 100. Very good. Mark should be less than 100, correct? Or greater than 0. It should be in between that number only, correct है ना? Yes, sir. 100 से ज्यादा तो मार्क्स नहीं हो सकता ना आपका किसी सब्जेक्ट में. तो अब यहाँ पे क्या है? आप अभी कोई भी नंबर एंट्री कर ले रहे हो, तो ये तो गड़बड़ है ना? Yes, sir. तो what actually we can do? Look, we cannot control, like अगर किसी का 50 मार्क्स है, तो अगर कोई गलती से 05 कर देता है, तो we cannot control this because this is a typo error. Okay, but in Excel we have a functionality that actually we can control, like instead of in the marks in case of the marks, it should be between 0 to 100 only, not more than or less than that. समझ में आया? Yes, sir. How to control that? See. So what we will do, first of all, we will select all the cells on which we want to put the validation. Then I will click on this data here, and you could see the data validation here. यहाँ पे दिख रहा है आपको? Yes, हाँ, sir. sir. Click करो. जैसे आप यहाँ पे click करोगे ना, see what is happening. You will get this option. Currently, as you could see, it is allow में क्या लिखा है? Any value. That means it can accept any values here. यानी कि अगर हम यहाँ पे ABCD भी लिख देते हैं ना, तो भी ये accept कर ले रहा है. देखो, है ना? So यहाँ पे हमको select करेंगे, data validation में click करेंगे. Now what I'm going to do is I'm going to restrict the user. So how? Now this time I'm not going to allow any value. I'll click on this. This time I will allow only whole numbers. And the condition should be between 0 to 100. समझ में आया? Yes, sir. ओके करते हैं. अब देखो यहाँ पे, अब अगर मैं यहाँ पे लिखता है 50, it is accepting. But अगर मैं लिखता हूँ 500, see, it is not accepting. It is giving me a message. What? The value does not match the validation restriction defined for this cell. समझ में आया? Yes, sir. So if I click on retry, again it will ask me to enter. So if I give the correct number, then it will accept. अगर आप 101 करोगे ना, तो भी वो accept नहीं करेगा. सिर्फ Don't 100 accept. करोगे तो ही वो लेगा. समझ में आया? Yes, sir. Is it clear? Yes, sir. So by this method, what actually we can do? We can restrict the user from feeding wrong input. ठीक है? From till some extent. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, अब यहाँ पे एक और चीज देखो. Now, everybody here is aware that why this message is coming. Correct? यहाँ पे जितने भी Yes. लोग हैं, सबको पता है ना ये मैसेज क्यों आ रहा है? Because it is not validity number. हाँ, because it is not valid. क्योंकि आप लोगों ने देखा कि मैंने ये कंडीशन डाला. करेक्ट? बट Yes, इमेजिन अ सिचुएशन, अगर कोई नया स्टूडेंट अभी ज्वाइन करता है, कैन ही और शी अंडरस्टैंड व्हाई दिस मैसेज इज कमिंग? No, sir. No. नहीं ना, वो तो नहीं समझ सकता ना. इसको भी थोड़ा हम लोग कस्टमाइज करते हैं कि सब कुछ समझ सके. तो देखो हम क्या करेंगे. अगेन आई विल सिलेक्ट दिस वन, डेटा Data वैलिडेशन. validation. So we are having this. तो अब हम क्या करते हैं, इनपुट मैसेज में जाते हैं. And here what I can do, I can show a message. So my message, it's a customized message, so you can write anything. So please enter. इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे. Please enter number between 0 to 100. 100 only. फिर मैं इसको ओके करता हूँ. अब देखो now what is happening. So whenever I'm clicking on the cell, I'm getting this tooltip. समझ में आया? Yes, sir. But
दिस वन इज इरिटेशन टाइप का नहीं लगता यहाँ पे हमेशा जब भी क्लिक करो? तो व्हाट वी कैन डू, वी हैव वन मोर ऑप्शन आल्सो, rather than showing this value here, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता, मैं इसको नहीं दिखाएंगे, हम शो करेंगे एरर, ठीक है? यहाँ पे एरर मैसेज कर देते हैं. नाउ सी, नाउ दिस मैसेज विल नॉट शो, बट जैसे मैं कोई गलत इनपुट करेंगे, सी इट इज गिविंग मी द प्रॉपर मैसेज नाउ. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई दिस एरर इज कमिंग. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. So this is a very good method that बहुत लोग यूज होता है, ऑफिसेस में बहुत ज्यादा यूज होता है ये वैलिडेशन. समझ में आया ना? हाँ हाँ सर. सर. ओके, अब इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा और काम करेंगे. डेटा वैलिडेशन पे जाने के बाद वी हैव 3 स्टॉप मैसेजेस हियर. अभी स्टाइल में क्या लिखा है? स्टॉप. बट हमारे पास क्या है? एक वार्निंग भी है और एक इंफॉर्मेशन भी है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दोस थिंग्स? कैन एनीबॉडी टेल मी? Information means giving the information that we should not do, and warning means we are giving that restriction. How I should say, sir? ओके, आई कैन अंडरस्टैंड. इंफॉर्मेशन में देखो क्या होता है, जब हम इंफॉर्मेशन सिलेक्ट करके ओके करेंगे ना, तो इफ आई गिव एनी रॉन्ग इनपुट, सो इट विल जस्ट इन्फॉर्म मी दैट आई एम गिविंग द रॉन्ग इनपुट. ठीक है? इट विल नॉट स्टॉप मी, इट विल जस्ट व्हाट, इट विल जस्ट इन्फॉर्म मी. तो अगर मैं ओके प्रेस करेंगे तो सी व्हाट इज हैपनिंग, इट इज एक्सेप्टिंग द रॉन्ग इनपुट. समझ में आया? Yes, sir. Why? Because it is just informing me that I am feeding a wrong input. Okay? Now, if I talk about the warning, see what will happen. Warning करेंगे तो देखो क्या होगा. Wrong input करेंगे तो it is warning me. It is not stopping me. It is warning me and also asking me that do I want to continue with the wrong input or not. तो अगर मैं यहाँ पे yes करूंगा तो what will happen? It will again accept it. समझ में आया? अगर no करेंगे तो it will not accept. But अगर हम yes करेंगे तो it will accept. But in case of stop, no matter what will happen, it is not going to accept any kind of wrong input. समझ में आया? Yes, sir. डिफरेंस समझ में आया? कर देता हूँ. Imagine a situation, यहाँ पे क्या था कि पहले blank था, we have inserted the condition and then we are giving the value, so it is stopping me. But what about अगर हमें ऐसा डेटा मिले, we already get a filled data, ठीक है? और in that filled data, what we are going to do? We are going to apply that validation. Now see what will happen. अगर मैं यहाँ पे apply करता है तो देखो, if I am giving any wrong input, it is not accepting. But previously which is already entered, वो उसको कुछ नहीं कर पा रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. In that case, what to do? See, what we will do. I'll click on here, and could you see this invalid circle, invalid data? Circle Yes, sir. invalid data. So click on this. So when you click on this, so it will circle all the invalid data. समझ में आया? Which is not Okay. according to the condition. Yes, sir. तो आप क्या कर सकते हो? जैसे इसको आप करेक्ट करोगे ना,